क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं हम फ्रॉम योर वर्कशीट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इनमें से क्या चीजें सही हैं. सो आई एम कॉलिंग फ्रॉम द ए सेक्शन सुखजिंदर कौर. सुखजिंदर कौर फ्रॉम ए सेक्शन. Sukhjinder is there? Sukhjinder is there? Who is having mic? बेटा थोड़ा सा माइक का फोकस सही कर सकते हो. इट इज मोर, आई कैन सी ओनली द कर्टन. सिर्फ एक रो दिख रही है, ए सेक्शन. थोड़ा सा इसको फोकस पे करोगे, बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट कंप्लीटली विजिबल टू मी. लास्ट रो तो दिख ही नहीं रही बेटा. थोड़ा सा इसको नीचे करो बेटा. अब फर्स्ट बेंच स्टूडेंट्स आर नॉट विजिबल टू मी. यस, इट्स थोड़ा सा फाइन. हाँ, ये नहीं है. ओके. सो यस, सुखजिंदर इज देयर. बेटा कॉर्नर रो में जो गर्ल एंड बॉय फर्स्ट बेंच में बैठे हैं, प्लीज कीप द माइक विद यू. यस. मैम नो. सुखजिंदर इज नॉट हियर. सुखविंदर कौर. सुखविंदर. मैम नो. ओके. मनप्रीत कौर. आवाज नहीं आ रही बेटा. माइक को ऑन रखो, एक बार ऑन रख के देन स्पीकर. इसको थोड़ी देर ऑन रखो. यस, नाउ स्पीकर. नो मनप्रीत. हर्षप्रीत. आपकी क्लास में ऐसा कोई बच्चा नहीं है इस नाम से. वानी इज देयर. ओके. तो आई विल कॉल फ्रॉम द रोल नंबर वाइज. ठीक है, देन रोल नंबर 6 आ जाओ. रोल नंबर 6. The worksheet का क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following is true about sexual reproduction? Yes. Which option? माइक को ऑन रहने दो बेटा, फिर आराम से बोलो. यस मैम ए ऑप्शन. ऑप्शन. यस, सिट डाउन. So it involves the union of two sex cells. ठीक है, that's nice. Option is A. Now coming to second. Which of the following sets of animals shows external fertilization? So B section से आ जाओ. रोल नंबर 4. B section, रोल नंबर 4. Absent. Okay, roll number 4 is absent. 5 is there. Ma'am, yes. Okay. So beta, second question. Which of the following sets of animals shows external fertilization? Ma'am, D option. Yes, frog, some fishes and starfish. That's nice. So answer is it's D. Coming to third question. So third is case study जो मैंने आप सबको क्वेश्चन करने को दिया था. अब मुझे बताओ, now you all are present here. How many of you have done these questions? किस किसने ये 1 to 10 क्वेश्चन ऑफ केस स्टडी सॉल्व किए हैं? किसने होमवर्क किया था? किसी ने भी नहीं, है ना, किसी ने भी नहीं. मगर ये क्वेश्चंस मैं आप ही से करवाऊंगी क्योंकि मैंने ये सारे आपको क्लास में करवाए थे.
Now it's your duty to complete these questions. So आ जाओ, first question of case study. Okay, now we are working on the case study. So let's work on the case study. First question, where does a frog lay its eggs? Why are the eggs covered with a jelly-like substance? So from the C-section is merged. Yes, beta, C-section merge है. Yes, beta, A-section से कुछ बोले? क्या बोल रहे हो बेटा? C-section is merged. Merge है ना? हाँ, it's present only. So from the C-section आ जाओ roll number 3. Roll number 3 from the C-section. माइक के पास आ जाओ. 3 roll number from C-section. बेटा प्रेजेंट है या नहीं है? इट्स योर ड्यूटी टू टेल मी. और अगर प्रेजेंट है, व्हाई यू आर टेकिंग सो मच टाइम? यस, 3 रोल नंबर. सी सेक्शन कौन कौन सी क्लासेस में मर्ज है? पहले तो वो क्लासेस बताओ. इन विच क्लास सी सेक्शन इज मर्ज? इन ए सेक्शन. एक तो ए में है, और बाकी कौन सी क्लास में है? बी सेक्शन में. तो योर रोल नंबर सी सेक्शन. बेटा व्हाई यू टुक सो मच टाइम? आपको अपना रोल नंबर नहीं पता था या सेक्शन नहीं पता था? I was calling again and again. Yes, beta. Or now you are not in second class, third class, fourth class grader. जो छोटे बच्चे हो, you are moving ahead to the adulthood, and this is how you behave, and especially in the recorded class that your teacher, your principals can watch anytime, and this is how you look like when they see you. Okay, so yes, question number 1 बताओ केस स्टडी का. In water. And why are the eggs covered with a jelly-like substance? To protect the eggs. To protect the eggs. ठीक है, that's nice. Sit down, beta. So everyone note down. Where does a frog lay its egg? In water. Everyone, in water. और jelly-like substance क्यों है? To protect eggs and keep them moist. So that's the reason. ठीक है? Now coming to second question. Second question. Now from the D section. D section, roll number 8. Roll number 8 from the D section. Yes, beta. So why do tadpoles resemble fish more than frogs? क्वेश्चन समझ आया पहले? यस बेटा. जो टैडपोल होता है, एक स्टेज होती है फ्रॉग की, जो वो पानी के अंदर रहता है. तो वो कह रहे हैं वो वाली जो स्टेज में जब फ्रॉग होता है, मतलब जिसको हम टैडपोल कहते हैं, वो ज्यादातर इसकी जो अपीयरेंस है वो फिश जैसी क्यों होती है इंस्टेड ऑफ फ्रॉग? वो फ्रॉग जैसा क्यों नहीं दिखता? व्हाई वी कॉल इट किट जस्ट लाइक ए फिश? मैंने भी जब आपको कराया था तो आई सेड इट इज मोर लाइक फिश. व्हाई सो?
गलत आंसर बता रहे हो। अरे वापस नहीं करनी कोई भी नोटबुक अगर आपके डेस्क पे कोई और सब्जेक्ट की होगी। अब आप सोचो, जो पानी के अंदर ऑर्गेनिज्म रह रहा है, हम कह रहे हैं टैडपोल कहाँ रह रहा है, पानी के अंदर रह रहा है, वो सांस कैसे लेगा बेटा? हाउ टैडपोल विल ब्रीथ? With the help of gills, गिल्स। अब गिल्स किसमें होते हैं और fishes में, फिशेज में होते हैं। तो अब बताओ, फिश की तरह सांस ले रहा है नहीं ले रहा? yes, अब मुझे बताओ सेकंड चीज, वो कैसे मूव कर रहा है? एक जगह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए क्या यूज कर रहा है? tail, टेल। अब टेल और किसमें होती है जो पानी में रहते हैं ऑर्गेनिज्म? fishes में, फिशेज में। तो अब बताओ, तो वो फिश की तरह है या फ्रॉग की तरह है जो टैडपोल है? fish की तरह, यही रीजन था बेटा, यही आंसर था। दैट्स द आंसर। थोड़ा सा बस हमें सोचना पड़ता है इसके बारे में कि why we are calling it like fish, because it has gills for breathing, it has tail for movement, ठीक है, instead of legs, instead of lungs, ठीक है? Is it clear? Sit down beta, sit down. So yes everyone, write down, tadpole के पास क्या है? tadpole have क्या है? gills for breathing and tail for movement. While adult frog has क्या है उसके पास? Adult frog has lungs for breathing and limbs, यानी कि legs or hands, we can say limbs for movement. So that's the reason. Everyone note down. Coming to the third question, what major changes take place in a tadpole to become an adult frog? क्या चेंजेस आते हैं मेजर टैडपोल में कि जब वो एडल्ट फ्रॉग बनता है? सो ई सेक्शन से आ जाओ, रोल नंबर 10। ई सेक्शन रोल नंबर 10। ये हो गया था बेटा, नोट डाउन कर लिया था? यस, ई सेक्शन रोल नंबर 10 बेटा। ई सेक्शन यस, ओके। ई सॉरी 10 इज 11 इज देयर, 11 is there? yes Okay. 11 roll number, you come and tell me the answer of question number 3 of case study. What major changes take place in a tadpole to become an adult frog? and gills change into lungs, Yeah. So gills changes into lungs or and tail gets shortened, tail shorten. That's nice. Tail shorten और क्या आ जाता है उनके पास? and legs start coming to them. Yes. So they have legs. और यहाँ पर गिल्स की जगह लंग्स। सो वी कैन से यहाँ पर एडल्ट फ्रॉग में क्या बन गया? गिल्स चीजें आ गई और यहाँ पर टैडपोल। Now coming to fourth, which stage in the frog's life cycle shows metamorphosis most clearly? किस स्टेज पे हमें पता लगता है कि हाँ कुछ चेंज हुआ है, स्ट्रक्चर इज गेटिंग चेंज्ड?
जहां पर हमें एकदम क्लियरली दिखता है कि जो पहले था वैसा नहीं हुआ, अब वो चेंज हो चुका है। कौन से वो दो स्टेजेस है जिसमें विजिबल होते हैं? सो दैट इज व्हाट बीइंग आस्क्ड हियर। सो क्वेश्चन नंबर 4, सो एफ सेक्शन इज देयर ना, सो एफ सेक्शन से आ जाओ रोल नंबर 4, रोल नंबर 4 फ्रॉम द एफ सेक्शन। यस बेटा। So which stage in the frog's life cycle shows metamorphosis most clearly? Ma'am, tadpole to frog. Tadpole to frog, yes, that's nice. So we can say that वो tadpole से क्या बन जाता है एकदम frog बन जाता है। So that tell us कि हाँ metamorphosis मतलब structure में change हुआ है। So that confirm us, ठीक है? Now coming to fifth, state one similarity and one difference between tadpoles and adult frogs. So you know about this. हमने ये कर लिया है, बार बार हम यही कर रहे हैं, अलग अलग वे में क्वेश्चन पूछा गया है। So tadpole you can say simple, they have, लोगों उनका अगर हम मूवमेंट की बात करें और फ्रॉग की बात करें, both are different. So they have gills, tail, they have lungs and legs. ठीक है? So these are the differences. Now coming to sixth stage जो मैंने आपको बताई थी, why is the frog called an amphibian? क्यों उसको amphibian कहा जाता है? So G section is there. G भी है ना eighth में? Yes, G section is also here ना? G Yes. So G is merged. G is also merged or it's not here? Merge है. So G section से roll number 4 आ जाओ. Roll number 4 from the G section. Wherever G section roll number 4 is sitting, please come. Yes. Yes, beta. So, beta, question number 6 of case studies. Why is the frog called an amphibian? Ma'am, amphibians are the animals which can live in water as well as on land. That's nice. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं because frog can live. क्योंकि हमें frog का पूछा है, can we say frog can live Ma'am, yes. on both land and water? So that's why it is called amphibian. ठीक है? That's nice. Sit down, beta. Now coming to next question. ठीक है? Seventh question. How does the life cycle of a frog show the importance of adaptation to both land and water? क्या adaptation है? Adaptation क्या हुई है? Water में रहने के लिए उसके पास क्या है? अब adult frog है. We are saying adult frog can live on both water and land, but it doesn't have gills now. अब उसके पास gills नहीं है जो tadpole में थे. So how it is living now? So adult frog में क्या adaptation आई है? If we talk about adult frog, so if it's in water, ठीक है, एक बार करते हैं land और water, ठीक है, दोनों जगह रह सकता है. So adaptation is what? In land they have lungs, वो lungs से सांस respire करता है, but when it is in water, it is through skin. तो वो स्किन के थ्रू रिस्पायर करता है, सांस लेता है. ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट एडल्ट फ्रॉग. टैडपोल की बात नहीं हो रही यहाँ पर. ठीक है? एडल्ट फ्रॉग कैन ऑल्सो लिव इन वाटर एंड लैंड बोथ. ठीक है? लेकिन टैडपोल कैन नॉट लिव ऑन लैंड. टैडपोल नहीं रह सकता लैंड पे. एडल्ट फ्रॉग कैन लिव ऑन बोथ स्पेसेस. ठीक है? Because for the land they have lungs, for the water they have skin, so they respire through skin also. Is it clear? So that's the adaptation they were talking about. So now coming to eighth question. ये मैंने आपको कल या last session में I think I have discussed this with you. Which mineral and which hormone is required for changing tadpole into frog?
सो ए सेक्शन से रोल नंबर 9, roll number 9 from the A section. Iodine. Iodine and hormone beta. Iodine is the mineral. That's right. And कौन सा हार्मोन होता है जो हमारे यहाँ पर बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है वो सिक्रीट करता है? Thyroxine. Thyroxine. That's nice. Thyroxine hormone. Everyone note down this. Is it done? Now moving to the 9th question. For B section, aja roll number 7. Roll number 7 aja. Yes. So beta question is type of fertilization in frog is External. external. That's nice. Sit down. Coming to next C section, roll number आ जाओ 11. 11 from the C section. अगर बाई चांस कोई नंबर रिपीट होता है रोल नंबर डू टेल मी. ठीक है, सेम रोल नंबर बार बार आज की क्लास में नहीं आएगा, सेम क्लास का. Yes, ma'am. ठीक है. वाई फ्रॉग ले सो मेनी एग्स, ये भी हमने किया था लास्ट टाइम. फ्रॉग एक बारी में इतने सारे एग्स क्यों ले करता है, क्यों रिलीज करता है? व्हाट इज द रीजन? इसको आई हैव एक्सप्लेन यू विद द बलून वाला शूट वाला कॉन्सेप्ट. अभी बताओ, एक फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रही है फ्रॉक की? इज इट इंटरनल और एक्सटर्नल? माइक कौन था बेटा? यस. क्या हो रही है? External. एक्सटर्नल, बाहर हो रही है, बॉडी के बाहर. एग कहाँ पर है? बॉडी से बाहर है. अब बताओ, जब एग अगर बाहर होंगे तो वो सेफ होंगे या नहीं होंगे, या डेंजर में होंगे? Dangerous. डेंजर में होंगे, है ना. उन्हें कोई खा सकता है या पानी के साथ वो बह सकते हैं. तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाई होगी या लो होगी? High. चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हाई होगी अगर एग्स ही खत्म हो जाए. Low. लो हो जाएगी ना. एग्स कम हो रहे हैं. अगर उन्होंने 100 एग्स ले किए हैं, उसमें से कुछ फिशेस भी खा सकती है, या कोई इंसेक्ट्स भी खा सकता है उन अंडों को. ठीक है. फिर कुछ जो है पानी के साथ बह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. एनीथिंग कैन हैपन. ठीक है, कुछ भी गलत हो सकता है उन अंडों के साथ. तो कुछ एक आधे या दो तीन अंडे तो रह ही जाएंगे अगर इतने सारे एग्स उन्होंने रिलीज किए हैं. तो एटलीस्ट अगर इतने से भी रहेंगे तो फर्टिलाइजेशन उनके साथ तो हो जाएगी. यस और नो? Yes. तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस इंक्रीज करने के लिए, कि जो है एटलीस्ट एग कुछ सरवाइव कर सके, कुछ जिंदा रह सके, इसलिए वो बहुत सारे एग एक बारी में रिलीज करते हैं कि एटलीस्ट कुछ रहेंगे तो फर्टिलाइज कर पाएंगे. अगर वो पहले से ही थोड़े रिलीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? चांसेस तो खत्म. अगर वो जैसे हैन होता है, हैन ले वन है, ठीक है, एट ए टाइम एक एग ले कर रहा है, बिकॉज वो कौन सा एग ले कर रहा है? फर्टिलाइज. उसकी फर्टिलाइजेशन अंदर बॉडी के हो चुकी है. बट इन केस ऑफ फ्रॉग, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. sperm has to meet outside the body, not inside the body. ठीक है. तो यहाँ पर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हैज टू बी इंक्रीज. ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? ओके, सिट डाउन, सिट डाउन. So we can say question है, why frog lays so many eggs? Because for survival of
of eggs and thus to increase chances of fertilization. So with this, our case study based questions are done. जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको आज हमें करना पड़ा क्योंकि आप करके नहीं लाए. Now we are moving ahead with the question number 3. Question number 3. The difference between frogs and hens egg is. फ्रॉग और हैन के एग में क्या डिफरेंस है? अब कोई अपने आप वॉलंटली करेगा पार्टिसिपेट? कोई हैंड रेस करेगा? क्योंकि हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए. All of the above. All of the above. Hen egg is covered by shell. Frog eggs are covered by jelly. Frog's eggs when laid are unfertilized, while eggs जो hen के eggs होते हैं these are fertilized. Frog eggs are laid in large number at the same time, whereas hen lays one egg at a time. ठीक है? All of the above. Third का. Now coming to fourth. Worm-like structure in life cycle of mosquito is called Larva. larva. So it's D. Regular G जिसको हमने specific नाम दिया हुआ है. Fifth, which stage of mosquito development is characterized by a lack of feeding and a focus on growth and transformation? किसमें वो रेस्ट करता है, खा पी के काइंड ऑफ सो रहा है, बस ऐसे हल्का सा हिलता रहता है. प्यूपा. Yes, प्यूपा. ठीक है. The organism which give birth to baby. Yes. What's the answer of question number 6? All the above. Okay. So B and D are saying all the above. So yes, called as viviparous, never form larva, young one born looks like parents. ठीक है? Coming to 7th, assertion reason question. Assertion is saying sexual reproduction is advantageous over asexual reproduction. Is it true? Okay. Okay, it's true. Now reason. Sexual reproduction helps in adapting different environmental conditions. Yes or no? Yes. A section जिनके पास माइक है, yes बेटा. A option. Okay, D is saying means all true. Yes, both are true. So now I need answer from A section. ठीक है, I can see F is also saying, B is also saying, B is also saying, but A section is quiet. So I need some answers from A section now. And E section, your mic is working, so you can participate also. ठीक है? Your video is not working, it doesn't mean that you can't participate. So now, assertion reason, 8th question. Tadpole larva of frog has tail and fins, while adult frog has limbs. Is it true? A section? True. Okay. Reason, change of larva into adult is called metamorphosis. True. Okay. So both are true, everyone. Mark it. Both are true. Reason, assertion, both are true. Now coming to 9th question. Two very small organisms, X and Y, both reproduce by the method of budding. तो हमने budding किया था, ठीक है? Organism X is industrially very important because it is used in making alcohol from frog. तो X क्या कह रहे हैं? It is used to make alcohol. ठीक है? ये क्या बनाता है? Alcohol बनाता है, sugar. Yeast. Okay, let's see. It is also used in making bread. और कहाँ use हो रहा है? Bread making में.
ठीक है. So organism Y is a tiny animal having tentacles which lives in water. Tentacles मतलब ऐसे ऐसे इसके जो है जैसे मूछे टाइप या कॉकरोचेस के बाल होते हैं ना आगे पैसे निकले होते हैं जस्ट लाइक दैट. ठीक है. तो ऑर्गेनिज्म वाई टेंटिकल्स के साथ. Now let's come to the questions. So first is what organism is X? X क्या है? Yeast. So X is yeast क्योंकि ब्रेड भी बना रहा है अल्कोहल भी बना रहा है so it's a yeast only. Now coming to B. Name the process in which X converts sugar into alcohol. उस process Fermentation. so it is called fermentation. Coming to C. To which class of organisms does X belong? Fungi, yes. Belong to fungi. Coming to D. Out of X and Y, which organism is multicellular and which is unicellular? मतलब एक सेल का बना है और एक बहुत सारी सेल का बना है. तो दिस इज यूनिसेलुलर. और फंजाई में आगे आप बेटा बड़ी क्लासेस में भी पढ़ोगे. फंजाई में सिर्फ एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है दैट इज यूनिसेलुलर. रेस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टीसेलुलर. हाइड्रा एक वाई क्या है? हाइड्रा है. ओके वैसे बता देती हूँ इसमें पूछा नहीं गया बट आई एम टेलिंग यू इट्स हाइड्रा एंड इट इज मल्टीसेलुलर. Multicellular. ठीक है इट्स अ मल्टीसेलुलर. Now coming to 10th question. X and Y are two types of animal. Let's solve it like this. इसको भी हम ऐसे ही solve करते हैं. Question number 10. X and Y are two organisms or animals. Animals like X undergoes external fertilization. I'm writing it as EF. ठीक है. Whereas animals like Y undergoes internal fertilization. The animals like X lay eggs. So it lay eggs. Then from which baby animals are hatched. On the other hand, in animals like Y, the young one develops. So it basically it gives birth to young ones. ठीक है? Young ones are developed inside the uterus of mother which then give birth to baby. ठीक है. ये चीजें इसकी दोनों के बारे में बताइए. So I have written here question A. A क्या पूछा है?